Matram, sir. God bless you. Jai Hind. Yeah. I think the Congress view is very, very clear. As far as the Congress is concerned, they will not say no, they will not say yes. They'll just say, let's see the draft, let's go see what happens. Because they can't really go against the Constitution, Pradeep ji. Constitution के खिलाफ कभी संविधान के खिलाफ बात नहीं कर सकते, सीधी वाली बात है. I mean, They'll whatever they've got. it's a part of the directive principle of state policy. I don't know how any party will disregard that and say that we are not will not allow the uniform civil code to come. I mean, it's not possible. All these things were all desirable things in the constitution, and if the constitution is being implemented, Mr. Modi is going to be absolutely assertive, as you talked about 370, Article 370, absolutely desirable. It had to be. He was the only person, only prime minister who could. He had the guts to take on entire people of or no sayers, and implementing it in letter and spirit. And not only after that, leave it at that place. He worked for the development of Kashmir, the tourism footfalls high, the way he tried to administer जिस प्रकार से डोमिसाइल चीज को उन्होंने चेंज करना चाहा. मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं प्रदीप जी. आपने कश्मीर की बात करी, ट्रेड एंड कॉमर्स. प्रदीप जी आपने कश्मीर की बात करी, एक छोटी सी बात आपको बताता हूं. यस यस सर, इस साल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अभी तक 1947 से लेकर के अभी तक सबसे ज्यादा पर्यटक कश्मीर में गए, सबसे ज्यादा. बिल्कुल. 1947 टुडे. लेकिन यहां पर एक और बड़ी चीज है, बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मालूम है सर, जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ सर्विसेज को लेकर के, सर्विसेज, व्हाट आर सर्विसेज? होटल रूम्स, मतलब होटल रूम पहले से ही हैं, कोई नए नहीं बनाने पड़े. वहां पर जो सर्विसेज होती हैं, रेस्टोरेंट्स में फूड सर्व करना, ट्रांसपोर्ट, ये वगैरह वगैरह, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड. आपको मालूम है जम्मू एंड कश्मीर की प्रोजेक्टेड इनकम फ्रॉम सर्विसेज ओनली, नॉट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, नॉट फ्रॉम सेल एंड परचेज, only from the service industry is 10,000 crores. Pradeep ji, 10,000 crore per year. 10,000 crore. अब 10,000 करोड़ किसी स्टेट को सिर्फ सर्विसेज से मिल रहे हैं. We are not even talking about establishing a new industry. We are not even talking about some huge investment coming in from the UAE, which is coming, by the way, which is about $2.3 billion, which is coming into Srinagar. 10,000 करोड़ सिर्फ सर्विसेज के हैं. एंड दिस इज कम अबाउट ओनली बिकॉज ऑफ द रिपील ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A. सीधी सादी बात है ना. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कुड पीपल इवन थिंक ऑफ अपोजिंग द रिपील ऑफ आर्टिकल 370. And this, by the way, is something that only Mr. Modi could have done. And this is where I take issue with the Congress party. जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि अगर हम लोग सत्ता में आ गए तो 370 को वापस लागू करने की कोशिश करेंगे. अगर वो ऐसा करते हैं प्रदीप जी, I think Congress will go back to 20 seats. मुझको ऐसा लगता है. प्रदीप जी बताएं. सर, जिस प्रकार से कल आप जब हम लोग सब देखे, जिस प्रकार से मेट्रो राइड मोदी जी मेट्रो राइड बच्चों के साथ दे रहे थे जी, एंड देन ही told the kids, we have made governance so easy, administration so easy, walk of life for you so easy that you don't require a penny in your pocket, and you go to any part of India. Yes. With only a mobile phone on and UPI and the UPI app. And UPI, yes, UPI app. और वही चीज प्रदीप जी आज ट्राइबल्स के बीच में थे, आदिवासियों के बीच में. आई होप वी हैव दैट फुटेज. कैन वी शो दैट प्लीज? बिल्कुल. आई वुड लव टू सी इट. कैन वी शो दैट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इतना सरल भाषा में उन्होंने कहा कि मैंने यूपीआई बनाया कि आपको आपके जेब में रुपया रखने की जरूरत नहीं है. मोबाइल लेके आप 7-8 दिन बिना संकोच किधर भी एनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री यू कैन गो एंड स्टे एंड यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम. Now that is development, that is technology, that is connecting people, that is when he said Vasudhaiva Kutumbakam, the whole India and the whole world has become a small place, marketplace, and he has proved that. The UPI payment is प्रकार 126 lakh crore जो उन्होंने कहा कि this is what the transaction. That's a world record. Yes, सब्जी वाले से लेके फेरी वाले से दूध वाले, they don't want money, बोले कैश रखिए, आप छुट्टा मेरे पास नहीं है, आप जरा गूगल पे कीजिए या पे फोन से. और this is what गरीब से गरीब लोग भी लिंक अप हुआ है. they have become part of this communication network and making life easier for everybody. Then you talk about article, the surgical strike, Balakot strike, triple तलाक के माध्यम से ऑलरेडी उन्होंने जो महिला, मुस्लिम महिला जो अत्याचार जो सह रहे थे उनको अपने साथ रख लिया. आप बोले कि मोदी जी खुद बोलते कि आई टेल यू विद फुल कॉन्फिडेंस दैट द एंटायर मुस्लिम महिला इज विद मी बिकॉज मैंने उनका जीवन सरल कर दिया.
I have saved them for suppression and oppression. I have saved them and given them the freedom that they want. Then now he is, जो पसमंदा मुसलमानों के बात आप कर रहे थे बार-बार. You were the first person to highlight that Mr. Modi is doing. Now, and by 60% of the Muslim population are pasmanda. So आज आप, they are being suppressed, they are being oppressed, you know, all kind of sufferings. सर ऐसा है over there, सीधी सादी बात है, पसमंदा मुसलमानों में सर अभी तक तो ये था कि सैयद और नॉन सैयद के बीच में शादी नहीं होती थी. अब तो ये मालूम पड़ गया है कि सैयद खान सिद्दीकी और ये बाकी जितने भी शेरवानी, ये सारे के सारे जितने सो कॉल्ड बख्शी, ये सारे के सारे जितने सो कॉल्ड अपर कास्ट मुस्लिम्स हैं, they look down upon the पसमंदा Muslims as though they are untouchables. सीधी सादी बात है. बिल्कुल सर. I mean, it's so terrible. So, okay, we've got that for this. Look at that, Pradeep ji. That is the Prime Minister along with the tribals. Amazing, absolutely amazing. I mean, really and truly amazing. So, ये और तीसरी चीज जो है, you see, uniform civil code is coming. Nobody can stop it. Let's be very clear. I may be saying कि भाई आप हर एक से बात कीजिए, सब कुछ कीजिए, वो सब बातचीत होगी. लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आके रहेगा साहब, उसमें कोई दो राय नहीं. राइट प्रदीप जी? यस बिल्कुल सर. यस. सो जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, वो तो आके रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है. भले आप कुछ भी कर लें, होना ही है. जैसे आर्टिकल 370 रिपील हुआ 2019 में, आर्टिकल 370 और 35A राम मंदिर बना के दिखाया अयोध्या में, और तलाक बिद्दत यानी वर्बल ट्रिपल तलाक को रिपील किया और उसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाया हिंदुस्तान में. लेट्स बी वेरी क्लियर, ये किसी और में हिम्मत नहीं थी, सिर्फ नरेंद्र मोदी में हिम्मत है. सीधी सादी बात है. हाँ, इतना जरूर है प्रदीप जी कि जहां तक प्राइस राइज का सवाल है, कीमतों का सवाल है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी फेसेस अ ह्यूज प्रॉब्लम. मुझको ऐसा लगता है. they are being very stubborn. They are refusing absolutely to see sense. सब्सिडी इनको देनी पड़ेगी साहब, भले जो मर्जी कह लें. प्रदीप जी? सर now I understand मोदी साहब का कहना है कि 9 साल बेबी साल, we have worked, और प्री मोदी पोस्ट मोदी 60 साल कांग्रेस के और 9 साल मोदी जी के. गडकरी जी ने भी इस चीज का एंडोर्स कर दिया कि 60 इयर्स में उन्होंने क्या किया था, और हमने 9 साल में डबल किया. इन डबल, जैसे वो दिस एयरपोर्ट 74 60 years of independence, and post Modi taking over 148 airports and going up to 410, 410 होने वाले. Yes, metro rail, the AIIMS hospital हो, इस चीज को you can't neglect, you can't नजरअंदाज नहीं कर सकते. Now Mr. Modi knows that all this development work means nothing if you can't translate that into votes, and votes will come. उनका जो formula है वो अलग ही है. For that he is working. पशमंदा मुसलमान, ओबीसीज को जिस प्रकार से डाइसेक्ट करके उनको सोशल जस्टिस, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, जो एग्जांपल उन्होंने कहा, जो एवरीबॉडी एग्रीज दैट टुडे, आज के तारीख में जो ओबीसी मिनिस्टर्स बॉडी गवर्नमेंट में है वो किसी सरकार में नहीं था. ही इज गिविंग सो मच ऑफ एम्पावरमेंट फॉर द ओबीसीज एंड वर्चुअली टोटली आइसोलेटेड दोस पीपल हु हैड द फुल कॉन्फिडेंस ऑफ द एंटायर ओबीसी. तो अराउंड 54 to 60% जो ओबीसी पॉपुलेशन है उसके लिए ही ऐसा फॉर्मूला. 14 to 20% of the Muslim population, he is dissecting it through triple talaq. Women को साइड में रख दिया, पशमंदा मुसलमान के इश्यूज को लेके वो मुस्लिम समाज में डेंट करने वाले. And now they are projecting the uniform civil code as something that will empower Muslim women even more. And those people who are against the uniform civil code are those people who want to keep Muslim women suppressed, exploited and without any powers. आज की तारीख में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है साहब, तो हर मुस्लिम महिला के पास अपनी राइट होगी, अपना हक होगा, उसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा. द पैट्रियार्कल सोसाइटी दैट द मुस्लिम विमेन हैव टू लेबर अंडर विल बी डिस्ट्रॉयड वंस एंड फॉर ऑल. Now that is what Mr. Modi is banking on, and that is huge, by the way. And if the Congress does not realize that, they would have missed the bus. Pradeep ji? No, the bigger challenge is Mr. Modi knows that development is an agenda, but I need to have my vote share and increase my vote share. I need to increase the number of people who voted to me, whichever the 18 crores or 20, whatever crores amount of people who voted for him. He need to get the figures high. He's working on that too, because he's not focusing only on development and forgetting about it. At the same time, we found a resurgent Congress doing the same thing. Mahila, Dalit, OBC, SC, ST, Muslim, backward, or Alpasankyak. Yes. They are also having
and they are aggressively trying to retain the votes which were theirs at the time of Indira Gandhi, and now they are trying to retain it back from the regional parties. Now the biggest challenge for the regional parties is to sustain those votes and remain alive, or merge with the Congress. See that BJP wins, BJP loses and Congress wins. But if the Congress wins 2024 with all this vote share that they regain, then what about the regional parties? Now this is the conflict, very interesting politics, how the Congress will play the trick. The Congress will get the people on board. एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता हूं. आपने कहा if the Congress wins, मैं आपको बोल रहा हूं, Congress does not even need to win. Even if they become an opposition party, the largest opposition with say 150 seats, even then the regional parties would have been destroyed. अगर आज कांग्रेस की 100 सीटें और आ जाती है ना, तो वो 100 सीटें वो रीजनल पार्टीज, प्रादेशिक पार्टियों के शेयर में से आएंगी, कहीं और से नहीं आएंगी वो. एंड दे आर लाइकली टू कम. अभी जिस प्रकार चीजें चल रही हैं, जैसे मैंने कल कहा, बीजेपी विल नॉट लूज इट्स वोट शेयर. It is the regional parties that will lose their vote share to the Congress party, because the entire Muslim vote is going to move to the Congress party. Unless, of course, Mr. Modi can pull a rabbit out of a hat, and because of the Uniform Civil Code, lots of Muslim women, lots of Pasmanda Muslims who are known as the Azlaf, they will move towards the BJP. But I don't see that number will be more than 20% or 25%. Even 25% of that number will be huge in terms of overall vote as far as the BJP is concerned. On that there is no doubt. And look at him. Right now he's interacting with the tribals. That's fantastic. Absolutely fantastic. Yesterday with the students, today with the tribals. Amazing man. Look at him. So every regional party today will be asking, what's in it for me? Yes. Now you want to win 2024, the Congress wants to win 2024. We need to protect our identity. That's right. And number two, what's in it for us? What's in? How do we survive? How do we prosper? Or so this is now it is KCR, YSR in the south. You know, Mamta here, MK Stalin there, Akhilesh, MK Stalin. So everybody has got. Bilkul. उनका जो main opposition है, the main opposition of left in Kerala is Congress. So yes. What happens to the left if they? So it's ये बहुत बड़ा एक challenge है, and how the Congress convinces the regional parties, or all the regional parties will just move and make a third front, and the third front will see that BJP wins. Now, as we see the movement of KCR Telangana, because if he supports the Congress in Telangana, he's finished, he's wiped out. How is he different from the Congress? In any event, the Congress is already working very hard to wipe out KCR in Telangana. That's what they're doing. That same thing is. Yes. That's what is happening in Bengal. Mamata Banerjee is having the same dilemma. YSR party is having the same dilemma. लेकिन प्रदीप जी, यहाँ पर एक चीज है, भले ही कांग्रेस आज मध्य प्रदेश जीत जाती है, जो इन ऑल लाइकलीहुड जीत लेगी, राजस्थान में हो सकता है अशोक गहलोत जी वापस आ जाएं, अभी 60% चांसेस है कि आ जाएंगे वापस. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत होगी और महाराष्ट्र में एमवीए की जीत होगी. लेकिन जब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार में अपना झंडा नहीं गाड़ती है, तब तक कांग्रेस जीत नहीं सकती है. उत्तर प्रदेश आज भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे हुए हैं, और जहां तक बिहार का प्रश्न है, वहां पे दैट सेम कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट वेयर द आरजेडी इज द बिगेस्ट फैक्टर. लालू यादव की जो पार्टी है वो सबसे बड़ा फैक्टर है वहां पे, और लालू यादव और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई है. वहां पर कांग्रेस लटक बन के चल रहा है आरजेडी का, उसके अलावा उनका और कोई वर्चस्व नहीं है. लेकिन उत्तर प्रदेश, दैट इज द की. 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की. प्रदीप जी, 80 सीटों में से बार कांग्रेस की सिर्फ एक सीट आई थी, ओनली वन सीट, दैट इज रायबरेली की, सोनिया गांधी की, और किसी की सीट नहीं आई है. मेरा ये कहना है कि जहां से एक जमाने में 85 सीटों में से कांग्रेस 70 सीटें लेकर के जाया करती थी, उस वक्त 85 हुआ करती थी, उसके बाद उत्तराखंड बन गया तो 5 सीटें वहां चली गई. मेरा ये कहना है कि इन 80 सीटों में से कांग्रेस नीड्स टू विन एटलीस्ट 20 या 25 सीट. अगर वो जीतते हैं, जैसा कि प्रदीप जी आपको याद होगा 2004 में जीती थी, इट वाज अ शॉक इवन फॉर देम. दे वन 20 सीट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश. they couldn't figure out what has happened. As a result of which, अटल जी की सरकार, जो हर एक को लग रहा था शाइनिंग इंडिया, अटल जी की सरकार वापस आएगी, which is why अटल जी lost and Dr. Manmohan Singh became Prime Minister. Will such a miracle take place again? I don't think so, because the original organization that the Congress used to have in Uttar Pradesh is already gone. Notwithstanding Priyanka Gandhi's best efforts, she has still not been able to build a grassroots organization in Uttar Pradesh. आज भी आप देखें,
महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तक चल रही है. कर्नाटक में व्हाट यू मेंशन जस्ट नाउ, दैट द लोकल लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस इज वेरी वेरी स्ट्रांग इन दी स्टेट्स. देयर इज नो लोकल लीडरशिप इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में आपको कांग्रेस का कोई नेता नहीं मिलेगा. यूपी का आज की तारीख में यह हाल हो गया है. तो जब तक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी को हिलाना बहुत मुश्किल है साहब, भले जो मर्जी कर लें. प्रदीप जी. Bilkul, exactly, sir. That's what I'm trying to say. That it's a very tight rope with the BJP, the Congress has to do, and they are moving exactly in the same pace. They know that these problems, hurdles are going to be there when you enter into the vote share of your regional parties. But they are working in a determined manner, saying that every party is free to enhance its vote share and to do anything that required to enhance its vote share, and they themselves are doing it. So they are very abundantly aggressive manner. और जोड़ो यात्रा नंबर 2 जो चल रहा है, फिर उनके अलग अलग कैंपेन जो they're touching grass roots, every houses in every wards, तालुकास, बूथ का कैंपेन जैसे मोदी जी ने शुरू कर दिया, उन्होंने भी शुरू कर दिया, reaching out to the last booth and empowering the last booth. So it's a tough fight. आने वाले the regional parties are going to decide exactly which way the things will go for the Congress, whether they push the Congress in power in 2024 or see to it that BJP is a safer bet. We don't have to deal them in the states. We just have to deal them in center, and there's no problem for that. But the only thing is, as far as the BJP is concerned, they'll have to convince all the regional parties. If today they're able to convince all the regional parties that they will not use the ED or the CBI or the income tax against them, the regional parties will be more than willing to make a deal with the BJP today. Let's be very clear. It is only because of the fact that they feel they're being harassed by the BJP, by the use of these agencies, that today they are talking so much to the Congress. Pradeep ji, before we go, the guest from the BJP is stuck somewhere. Mr. Daruwala is very, very busy. Let's take a look at some of the comments. We have some comments and some of them are very, very colorful. Let's take a look. ये नासिर हुसैन साहब के साथ जो हमारी बातचीत हुई थी उसके बारे में है. Nobody is given right to cow rakshak to protect cow from theft, but the peaceful has God given right to steal cows. What nonsense. Anirudh Datta, now where did this come from? How do you know that the cows were stolen? चलिए आगे चलिए जी. Right, that is a conversation that Pradeep ji and I had yesterday. Hindu jago before it is too late. Hindu jago. अरे यार, we are over 90 crores. इससे ज्यादा और क्या जागेंगे? 140 करोड़ के लोगों में से प्रदीप जी आज की तारीख में हिंदुओं की पॉपुलेशन जहां तक मेरा ख्याल है 90 करोड़ के करीब होगी. Exactly. If not more. If Pappu is forced on the nation, PM, the entire family will be assassinated like Rajiv and Indira. Hindus will not tolerate. Oh God, this is terrible. We can't carry this. Get rid of this, please. He's talking about assassinating somebody. Can we move on, please? Mr. Raghu Reddy, we will not carry anything of this. The next one is even worse. Oh God, look at this. This is huge. Tell him to go and meet the Hindus that were attacked by Muslims in the pre-planned Delhi terrorist attack, that he lied to the case and NRC and incited them to violence. Tell them to go and visit the Hindus that were attacked by the Muslims who pre-planned every single major riot since Modi has been in power. But Mr. Modi says there has been no riot ever since he came to power, whom he never even condemned to this very day, whom he incited or supported their violence and blamed the Hindus despite the fact that the police charge sheets and videos tell a whole different story. Tell him to go to the Kashmiri Pandits and apologize for allowing the terrorists to slaughter thousands. But at that time, Congress was not in power. The VP Singh government was in power, as far as I know. And the BJP was supporting the VP Singh government. Right, so we get the drift of Mr. Angel Baby 997. Right, let's move on. Do we have any more? When the administration is to put all their forces to bring law and order to control, if PM visits, they will not have problem to divert the security force. What did Rahul say after his visit? Only provide good food and shelter. Should he say which community is responsible for the for this and what is this solution? That's what this person wants to say. Game metrology, what? Omega metrology, that's what he says, right? So we do get very, very colorful, excellent appeasement of Jinnah by Gandhiji and Nehru, consented division of this country into pieces. Shameless lakhs of people killed by dirtiest community of Pakistan and Bangladesh. Shameless appeasement still continuing. Vasant Kumar.
So he says. Right. Now I was told the last one was last. Now I've been told this one is the last. Right, प्रदीप जी, कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस बढ़ रही है, जिसकी वजह से बीजेपी के भी अटैक्स कांग्रेस के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं. लेकिन let's be very clear, as far as the regional parties are concerned, they have to decide for themselves whether or not they will allow their votes to go to that side. I think they're going to fight tooth and nail. Congress has a big fight ahead of them. Congress will have to convince all the regional parties that, hey, listen, we are not eyeing your votes. How will they do that, Pradeep? Do you think they'll be able to do that? I doubt it very much. Because all the regional satraps, they're not fools. Mamata Banerjee is not a fool. I mean, she's a hardcore leader. Yes. She knows what's coming out for her. You know, what is she? She's the first person who says, what are you sacrificing in your state? Yes. In West Bengal. So we go ahead. So everybody, you know, you had many leaders coming on the show, like Mr. Tiwari, who was a very close political pundit who observed all these things very carefully. He said Congress has to make sacrifices. Now, how much sacrifice Congress has to make? Sacrifice? And how much? Bengal, as Mamata Banerjee rightfully put it, in Bengal you don't have to make any sacrifice. You're not there at all. क्या sacrifice करेंगे आप? सीधी साधी बात है. So that's a very complicated question that the Congress will have to work out. कि भाई जहाँ तक के स्टेट इलेक्शन का सवाल है, वहाँ पर आप अपना वर्चस्व कायम रखें और लोकसभा में हम लोग अगर कुछ वर्कआउट कर लेते हैं, so that will be fantastic if they can do it. But even over there, with the growing arrogance of the Congress, the growing confidence of the Congress, I don't think it's going to be very easy because the local leadership of the Congress is going to demand its own pound of flesh. They're not going to give up. जैसे अधीर रंजन चौधरी साहब जो हैं, he is still not missing out on any opportunity to attack Mamata Banerjee. मतलब Bilkul, absolutely. So and that, by the way, will be the same because everybody cannot be as matured as the Maharashtra leadership of the Congress or the Madhya Pradesh leadership of the Congress. You need Sir, even in Maharashtra, you know, the Congress knows how much they can rely on Sharad Pawarji. Yes. Because Sharad Pawarji wants his pound of flesh, and if he doesn't get his pound of flesh, he is either here or there. I mean, there is his history behind all across. प्रदीप जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, आज की तारीख में जो कांग्रेस की इस वक्त स्थिति है महाराष्ट्र में, अगर कांग्रेस अकेली भी लड़ती है तो उनको उतनी ही सीटें मिलेंगी, भले वो एमबीए के साथ लड़े या ना लड़े. वेरी फ्रैंकली, अगर आज कांग्रेस और एनसीपी अलग लड़ते हैं ना, तो उतनी सीटें मिलेंगी उनको. मुझे ऐसा लग रहा है. बिल्कुल. कोई फायदा नहीं होने वाला. और जहां तक के एक लटक जो है उनके साथ, वो है शिवसेना. वो शिवसेना का जो वोट है उनके पास अगर आ जाता है, that will make a bit of a difference. That may be a game changer to reduce the strength of the BJP. So finally, the final battle will be between the BJP, Congress, NCP, and the Shiv Sena playing a minor role. मुझे ऐसा लग रहा है. But the time will tell. That's it. That's just about it for tonight's show. आप देखते रहें नेशन नाउ. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. Please do keep sending in your comments. We'll of course meet you on Monday. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram. Vande Mataram.